सो माइक्रोसॉफ्ट में आपका करंट रोल जो है, इस रोल में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज? फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? विल एआई रिप्लेस ह्यूमन? I just passed out my 10th with 54%. या 10th के पहले आप ज्यादा मिस्चीवियस थे या लाइक व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में लाइक आरपीए टूल्स पे भी काम किया, फॉर एग्जांपल यूआई पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिज्म, इनको एक्सप्लोर किया, इन पे पीओसीज करी है, राइट? And during that time, somehow एक startups जो होते हैं, तो उस टाइम पे startups ही है जो बहुत अच्छे आपको chances देते हैं. Basically, how you got into Microsoft? I applied Microsoft में for 48 times. Yeah. Oh, 48 times that's I a applied. huge number. In last I think 7-8 years I applied 48 times. I got rejected 47 times. So this was the 48th time I got selected. Guys, welcome to another episode of RPA Feeds podcast show. Today I have with me very special guest Vijay. Vijay is from Microsoft. एंड आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग जानने वाले हैं विजय की जर्नी, वो कैसे माइक्रोसॉफ्ट में उनको अपॉर्चुनिटी मिली, कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और कैसे आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, वो पाथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें विजय बताएंगे। विजय अपने लोकल ग्रुप में क्लाउड बॉय के नाम से बहुत फेमस है, तो वो क्या जर्नी थी, वो कैसे उनको नाम मिला, वो भी जानेंगे। उनका क्या काम रहा था क्लाउड टेक्नोलॉजीज के दायरे में, वो भी जानेंगे। एंड देन उन्होंने लो कोड नो कोड टूल्स पे भी काफ़ी काम किया है, स्पेसिफिकली यूआई पाथ, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, इस तरह ट्रेंड्स जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एक पॉडकास्ट में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाला है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। कहूँगा विजय, वेलकम टू द पॉडकास्ट शो। Thank you. Thanks, Dipendra. Thank you very much. I'm good. Yeah, it's a very early morning and बहुत excited हूँ and interested भी हूँ मैं. Thanks for inviting. Thank you so much. Yeah. काफ़ी बात करेंगे आपसे, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। आई होप इंटरेस्टिंग रहेगा पॉडकास्ट और वैल्यू एड भी रहेगा लोगों के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाई डोंट यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, विजय? Yep, sure. Hi. Hello everyone. I'm Vijay. I work as a partner technology strategist here in Microsoft, and I'm based out here in Singapore. So, it's been totally 10 years of experience I have, and usually I started everything in the cloud. But at this point, Microsoft Singapore mein okay, then I have my wife and my 8-month-old kid. I'm very as a father, then as a tech guy, I'm trying my best. और बहुत सारी चीजें आपको टेक्नोलॉजी में जो आजकल आप देख रहे हो, तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लोरिंग, लर्निंग एंड ट्राइंग टू सी के और उसको कैसे और चीजें नए सीख सकते हैं। सो या दैट्स अबाउट मी। सो विजय, क्या आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ कि आप अब जिस लेवल पे है अभी माइक्रोसॉफ्ट में, कैसे स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया, कौन सी कंपनीज में जॉब किया, क्या स्किल्स एक्वायर की और फिर कैसे यहाँ तक पहुंचे? श्योर। सो दीपेंद्र, मैंने मेरी जर्नी मींस okay, after 10th means I just passed out my 10th with 54%. I did not have a very good marks in academics जब भी मैं स्कूल में था तभी, but luckily means I got my dad was working in Larsen and Toubro during that time. So dad L&T में थे तभी, they have a special provision जहाँ पे within organization उन्होंने एक college setup था, that was LTIT, Larsen Toubro Institute of Technology. So वहाँ पे employees, workers, उनके बच्चों को preference मिलता है if they want to pursue diploma. तो मैंने diploma किया था वहाँ से in industrial electronics. And IT में basically that was just a step in for me to understand and learn के electronics और ये सब चीजें क्या है. So motherboard से वहाँ से सब चीजें we started learning. So it was a 4 years of course. I completed my diploma and I passed out with the distinction. So I was the second rank holder in my diploma when I completed after my 4 years of the diploma course. And then I joined Terna Engineering College. It was in Nerul. And again, I passed out with first class. And I completed my engineering in electronics and telecommunication. And जैसी इंजीनियरिंग और ये सब कुछ हुआ तो इन इंडिया वी एक्चुअली हमारे जब भी आप पूल कैंपस जब भी होता है तो यूजुअली दे सी योर एकेडमिक्स, आपके स्कोर्स कैसे, एंड दे नीड अ क्वालिफाइंग स्कोर। 60% इज द फर्स्ट स्टार्ट, बिकॉज ऑफ विच मुझे मेरे पूल कैंपस में कभी कोई इंटरव्यूज की, बिकॉज 60% इज समथिंग विच यू नीड। आफ्टर दैट इट वाज अ बिट चैलेंज फॉर मी टू गेट इनटू दैट पूल कैंपस। नहीं हो पाया मुझे वहां पे कुछ जॉब्स, सो आई वाज लुकिंग आउट फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम समहाउ एक स्टार्टअप्स जो होते हैं, तो उस टाइम पे स्टार्टअप्स ही है जो बहुत अच्छे आपको चांसेस देते हैं। आई जॉइंड अ स्टार्टअप एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर।
and then I used to visit the field, solve a small organizations problems like उनके desktops में कुछ issues होते हैं, servers में कुछ issue होते हैं, and that was my learning journey. So I started to learn and understand all about the different product portfolios, Microsoft, Linux, then during that time networking. So back in 2012, ये चीजें बहुत hot थे उस time पे to understand, learn and explore. ये सब सीखते सीखते I used to I grasp more knowledge about Microsoft products, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर आप देखोगे तो जो पोर्टफोलियो जो भी प्रोडक्ट्स है एज पर माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम, ज्यादा करके हमारे जो एंटरप्राइजेस है, फिर बाद में स्मॉल मीडियम बिजनेसेस कहते हैं उसे, एसएमबीज, तो वो ज्यादा करके माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में. एंड दैट इज द चांस वेयर एवरी वन ऑफ अस जो भी टेक्निकल सपोर्ट्स में है, दे हैव एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो ट्रबल शूटिंग और ये सब करने में. सो दैट वाज माय इनिशियल 4 years, और जहां पे मैंने पूरा ये सेटअप किया था. आई एक्सप्लोर्ड एंड आई लर्न. After that, I got an opportunity working with GSI. So 𝐏𝐬𝐚𝐬𝐭 was the one which I joined. And in that, while joining that company, I got an exposure working with the European customers. So mostly European customers के जो भी ये होते थे, तो I used to work with them on different products. Then I used to transition जो भी हम उनके migration होते थे applications, तो किसी और vendor से customer के लिए 𝐏𝐬𝐚𝐬 के इसमें टीम के साथ onboard करना, फिर बाद में उनके लिए पूरा environment setup करना, landing zones, फिर बाद में scripting, automation. That was the one. And during that time, RPA, I think तभी 2016 to 2018 के बीच में RPA was something which like business process automation के लिए many tools which was exposed in market. And it was very big boom during that time. So I started learning and exploring a lot about it. After finishing my tenure with 𝐏𝐬𝐚𝐬𝐿, I got an opportunity in Singapore with 𝐎𝐻CL, which was later on acquired by PCCW, which was again acquired by Lenovo. So I was very happy to get a job over here in Singapore. मैंने उनके interviews crack किए. You have to demonstrate a lot. And during that time, I completed few of the projects on AWS. क्योंकि मैं तभी AWS, because when you work with SIs, you are not tagged to a specific hyperscaler कि आपको Microsoft के साथ ही काम करना है या AWS इसके साथ ही काम करना है. You have to scale yourself across multiple hyperclouds. So AWS, Google and Microsoft was the one जो prominently उस time पे cloud business में lead कर रहे थे. And I completed few of my projects in 𝐻CL. After that, I joined a local company in Singapore, Asia Pac. Then Asia Pac में I was working as an Azure architect. I was working on many of the cloud deal solutions as an architect. Again, I had an extended team back in India. So वो team मुझे help करती थी delivery and deployments करने के लिए. And I was more like a technical pre-sales person, going to working with most of the customers, trying to close the deals. And then my extended team used to step in and help to complete the project. And after that, I joined Avanade. Avanade was again a little bit of like Microsoft के बहुत ecosystem के साथ बहुत projects करते हैं. So I again got an opportunity to work with Brunei-based customer. And after completing a few of my months with Avanade, then I was interviewed in Microsoft. And बहुत interesting ये थे. And then after that, for last 2.5 years, I'm working in Microsoft as a partner technology strategist. So that's the overall journey. Yeah, thanks for sharing your journey. I think बहुत ही inspiring है, because like 10th में अगर आप less than like first class achieve नहीं कर रहे हो इंडिया में, less than 60% अगर 10th और 12th में आप आ रहे हैं, तो आप eligible नहीं होते हो बहुत सारे इंटरव्यूज में बैठने के लिए, या बहुत सारे कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स में एलिजिबल ही नहीं होते हो आप बेसिकली, राइट? MNCs या जो बोल लो टॉप कंपनीज में, फिर आपको ऑफ कैंपस वगैरह ट्राई करना पड़ता है. बट या आप 10th के बाद इतने इम्प्रूव हो गए, लाइक क्या ये इंटरेस्ट था, या 10th के पहले आप ज्यादा मिस्चीवियस थे, या लाइक व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन? मे बी एक्चुअली यस, मैं मेरे फैमिली में आई हैव 2 elder sisters और मैं छोटा हूँ घर में. तो एक्चुअली ऐसा था कि बहुत पैम्पर्ड था. तो बट क्या हो गया, वो पैम्परिंग जो भी पेरेंट्स से आती है, छोटा बच्चा है, 2 बहनें हैं, सो दे यू नो राइट, द सिस्टर्स if they are elder sisters, वो definitely बहुत responsibility घर का ले लेते हैं. And then छोटों को बहुत प्यार मिलता है, pampering मिलता है ना, थोड़े से मस्तीखोर हो जाते हैं. And that's the reason I did not pay much attention. मेरे स्कूल के homeworks भी मेरी sisters complete करके देते थे. So that was the one reason. But the biggest turnaround point था मेरे लिए. It was like कि मेरे mom dad was expecting कि my sisters were actually they are very scholars. तो उन्होंने उनके आईटी उनके जो भी एकेडमिक्स और जो भी था उन्होंने जो अचीव किया है, दैट वाज वे पार.
तो मुझे मेरे पेरेंट्स को था कि ये भी बच्चा कुछ सीखे कुछ करे एंड देन अब जब भी आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं देन देयर इज अ लॉन्ग वेटिंग क्यू to get an admission. So उस time पे I was staying in Airoli back in India. तो Airoli में you have an engineering college very well known at Datta Mege college. Me and my mom we went in the morning 9 o'clock. We were standing in the queue कि आपको एडमिशन मिलेगा बट लुकिंग एट द परसेंटेज एंड एवरीथिंग आपको पता है क्यू भी बड़ी होती है वेटिंग लाइन इज वेरी बिग एंड उस टाइम पे माय मॉम वाज क्राइंग लाइक तू पढ़ लेता कुछ तो करता अच्छे से मार्क्स लेता तो एंड दैट हर्ट मी अ लॉट ऐसे क्यों एंड देन इट स्विच्ड. So for the audience, right, it doesn't matter if you score 60% or not, or you score distinction. It doesn't matter. आपको आपकी लाइफ लाइक इंजीनियरिंग के बाद there is lot you put your skills to practical use. आप प्रैक्टिकली कैसे स्किल्स को सीखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, and then you can crack maybe Google, Microsoft, Amazon, Meta जो. So it doesn't matter कि आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होने चाहिए, और इंटरेस्ट कभी भी जाग सकता है. It is all about your skill set. अगर आप स्किल सेट एक्वायर कर पा रहे हो, राइट स्किल सेट, तो आप राइट अपॉर्चुनिटी लेकर के इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो. थैंक्स विजय फॉर शेयरिंग दोज इनसाइट्स. सो माइक्रोसॉफ्ट में आपका करंट रोल जो है लाइक पार्टनर टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिस्ट, राइट? सो इस रोल में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे ऑडियंस को? So as a partner technology strategist, I usually see Microsoft, we have a customer facing ecosystem and we also have a partner facing ecosystem. Microsoft is a service and also a product based company. So whenever we want to give the products to our customer, तो हम ये चाहते हैं कि कस्टमर उसे यूज करे. बट माइक्रोसॉफ्ट अगर वो डिलीवरी करना है, वो प्रोडक्ट डिप्लॉय करना है कस्टमर को, वो उसको यूज करना है, दे वांट टू डू अ पीओसी, दे वांट टू अंडरस्टैंड एक्सप्लोर मोर अबाउट द प्रोडक्ट. दिस इज वेयर द पार्टनर इकोसिस्टम कम्स इन. सो व्हेन वी से पार्टनर इकोसिस्टम क्या है, तो पार्टनर इकोसिस्टम इज द चैनल पार्टनर्स, फिर बाद में ग्लोबल एसआईस, जीएसआईस, एसआईस, आईएसवीस. तो जैसे अगर मैं एक दो नाम लेना चाहूँ तो कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, किंड्रल. सो दिस आर वन ऑफ द ग्लोबल एसआई प्रोवाइडर्स जो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन हैंड काम करते हैं एंड डिलीवरी करते हैं. मी एज अ पार्टनर टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिस्ट, आई हैव टू क्लोजली वर्क विद दिस जीएसआईस एंड एसआईस. तो व्हेन आई वर्क विद देम मींस व्हाट, यूजुअली पार्टनर्स जो भी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स होते हैं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर बिजनेस करना है तो वो बिजनेस के वक्त आपको टेक्नोलॉजी कौन से हैं. तो वी एक्चुअली एज अ माइक्रोसॉफ्ट वी हैव अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी पिलर्स. वी कॉल इट एज एज्योर इंफ्रा, वी हैव एज्योर डेटा एआई, वी हैव एज्योर ऐप इनोवेशन मॉडर्नाइजेशन. अभी ये हो गया सिर्फ एज्योर के रिगार्डिंग, बट देयर इज आल्सो सिक्योरिटी, देयर इज मॉडर्न वर्क. नाउ पार्टनर वांट टू, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पार्टनर को सिक्योरिटी में बिजनेस करना है माइक्रोसॉफ्ट के साथ. सो अगर सिक्योरिटी में करना है तो सिक्योरिटी इज अ वेरी वाइड पोर्टफोलियो. सिक्योरिटी में आप क्या देख रहे हो, इज इट अ थ्रेट प्रोटेक्शन, इज इट अ मॉडर्न सेकऑप्स. अगर आपने कुछ लेटेस्ट चीजें अगर सुनी होगी माइक्रोसॉफ्ट की, तो दैट इज अ को-पायलट फॉर सिक्योरिटी. सो को-पायलट फॉर सिक्योरिटी. अभी अगर पार्टनर इकोसिस्टम में पार्टनर्स यूजुअली गेट कंफ्यूज कि मुझे बिजनेस तो करना है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एंड दैट इज व्हाट द सिक्योरिटी. सो सिक्योरिटी में मैं क्या कर सकता हूँ, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू एक्सप्लोर. दिस इज वेयर आई कम इन, आई क्लोजली वर्क विद द पार्टनर्स प्रैक्टिस लीड्स. तो उनके प्रैक्टिस लीड्स होते हैं, उनके सीटीओस होते हैं. दे सेटअप, वी डिस्कस कि मुझे ये करने के लिए आई नीड अ कैपेसिटी मींस दिस आर माय पीपल, दिस आर माय रिसोर्सेस, and now their capabilities is L100. वो सिर्फ fundamentals जानते हैं, but I'm the one who is working with the practice lead and the CTOs to bring those capabilities from L100 to L300 to L400. तो इतने लेवल पे अगर capabilities built हो गए, then they can go in a market, they can present themselves, propose solutions to the customer on Microsoft security stack, and then close the deals. So that kind of a business portfolio वो बढ़ाने के लिए I work as their partner technology strategist. We built up a strategy, we built up a plan to achieve success. Awesome. I think आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और ऑडियंस को भी ये रिलेट होगा कि एग्जैक्टली क्या काम होता है इन बड़ी कंपनीज में. तो आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में लाइक आरपीए टूल्स पे भी काम किया, फॉर एग्जांपल यूआई पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिज्म, इनको एक्सप्लोर किया, इन पे पीओसीज करी है, राइट? सो आपने जब इनको इवेलुएट कर रहे थे आप, तो इनमें से कौन सा टूल आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा? I would not use the word tool because अभी अपने आप में ये सारे एक matured platforms हैं, they are not just a tool. So आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा और क्यों? Okay, अगर मैं इसे दीपेंद्र बताना चाहूँ तो it depends उस वक्त उसकी यूज केस क्या थी, वो सिनारियो का क्या था. I was working in Capgemini during that time. I was exploring a lot about the business process automation tools. And since like while during that time, my it's like 2018, 2016,
It was mostly like Capgemini was a partner of UiPath, so हमें free access मिलता था and credits मिलते थे. But still we were very hungry to learn more about the different tools because we also have to come up with a comparative. एक use case mind में था कि मेरे bosses को भी था कि see Vijay, we want to see how we can use this tool and optimize our operations क्योंकि तभी हमारे पास L1, L2, L3 level के operations teams थे. During that time, so we started our journey exploring UiPath. So UiPath में ऐसे थे कि okay, I'll tell you this. UiPath was the first tool which we explored. UiPath में बेस्ट चीज एक थी कि वो बहुत ही वर्सेटाइल था. उसका UI बहुत ही ये था एंगेजिंग था. बहुत सारी चीजें उसमें अवेलेबल थी विच वी कैन इजीली इंटीग्रेट विद विजुअल स्टूडियो कोड. सो एज अ डेवलपर मुझे कुछ जब भी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कभी कुछ मैं वो वर्क फ्लोस लिख रहा हूँ, आई वॉन्ट टू नो कि वो मेरे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के साथ आईडी के साथ इजीली इंटीग्रेट हो रहा है क्या, एंड विच आई कैन शेयर इट विद माई अदर डेवलपर कम्युनिटीज. So मेरी टीम थी, we were building up the whole things together. We came up with like return on investment for a plan for my boss कि boss अगर हम ये attended robots and unattended bots अगर हम हमारे लैपटॉप्स में नहीं तो हमारे वर्किंग सर्वर्स में इंस्टॉल करते हैं, so this much we can save and these are our processes which we can automate. So that was one. And I think automation anywhere was in a very early initial days उस टाइम पे. Lot of things were still in the troubleshooting testing. So वो product उस वक्त उतना matured नहीं था. That's a reason. Again, we went back to UiPath. We tested with automation anywhere. Blue Prism, yes, to some extent Blue Prism था, but Blue Prism was a little bit lagging with the performance. तो उस वक्त जो हमारी requirement थी वो Blue Prism meet नहीं कर पा रहा. And UiPath was उस टाइम पे UiPath have actually a lot of technical support team available. उनका setup इंडिया में जो हमें हेल्पिंग हैंड होनी चाहिए थी, that was readily available, so we can reach out to them, and that was one of the case. So I can say UiPath was very promising during that. Okay, yeah, agree. Those were the initial days, and उस टाइम पे उनका इकोसिस्टम काफी अच्छा था. Like when it comes to academy, people trying out their tool, community edition available था, फिर जो काफी लोगों को enable कर सके, right? वैसी community थी. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज उनका लर्निंग प्लेटफॉर्म उस वक्त उन्होंने अवेलेबल किया था जिसमें इफ मी एज एन इंडिविजुअल आई वांट टू डू सर्टेन थिंग्स, राइट, आई वांट टू लर्न द प्रोडक्ट फर्स्ट. क्या है इसमें फीचर्स क्या है, इसमें ये चीज है क्या. फॉर एग्जांपल आई सेड कनेक्टिविटी टू एन आईडीई, वो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए. देयर वाज लॉट ऑफ आर्टिकल्स रिटन बट देयर वाज आल्सो वीडियो गाइडेंस टू इट, सो दैट हेल्प मी अ लॉट. और एल्स मुझे बाकी टूल्स के लिए आई हैव टू स्ट्रगल गो फिगर आउट कहां पर है, बट इन्होंने एक लर्निंग इंस्टीट्यूट बना दिया था. Even after that you learn, you get that diploma, you can learn about all the UiPath, and there were different versions they were releasing, because I think I completed that learning platform on 2018 जो UiPath जो 2018 version. Got it. Thanks again answering that. And actually लोगों को कंपैरिजन ऐसे नहीं करना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन द, यू हैव राइटली पॉइंटेड इट आउट कि उस समय क्या नीड थी या व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, उसके हिसाब से आप अपना प्लेटफॉर्म चूज करो एंड गेट द वर्क डन बेसिकली, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड कंपेयरिंग कि कौन सा फीचर किस में अच्छा है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड, योर बजट and your implementations. So moving on to the next question, आपके ओपिनियन में जब हम बात ही कर रहे हैं लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म्स की, आरपीए प्लेटफॉर्म्स की, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि पावर प्लेटफॉर्म या फिर सिमिलर लो कोड प्लेटफॉर्म्स, राइट, आपका क्या ओपिनियन है इन लो कोड नो कोड के फ्यूचर के बारे में? ये कैसे इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट करेंगे? तो अगर आप देखोगे तो इनिशियली जब भी प्रोडक्ट्स थे, they used to make this product available कि ये आप प्रोडक्ट लो और ये प्रोडक्ट आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करो, नहीं तो आप सर्वर्स में इंस्टॉल करो, एक एनवायरनमेंट सेटअप करो. लेटर ऑन कस्टमर सेड कि हमें ये मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा है. Then they came up with the PaaS platform kind of a thing, जहां पे because of the cloud, जब भी cloud already boom हो रहा था and infrastructure as a service, PaaS as a service, customers started demanding मुझे ये servers और ये सब maintain नहीं करने, can you give me a PaaS kind of a platform जिसे मैं start करके I can save the cost, also जो behind the scenes managing जो होती है overhead, वो overhead प्लीज ये hyperscalers you take care of it, और जो भी प्रोडक्ट मुझे ऑफर कर रहा है you please take care of it. I do not want my people to put their efforts in all those administrative work. Okay, तो ये था उनका. इससे तो दे मूव टू द पास. अभी पास के बाद मोस्ट ऑफ द कस्टमर सेइंग मुझे वो पास भी मेंटेन नहीं करना है, गिव मी अ सास ऑफरिंग. तो मुझे सास चाहिए. तो अभी सास ऑफरिंग्स में सब आप देखोगे तो प्रोडक्ट सब उसमें ये इवॉल्व हो रहे हैं. दे आर गोइंग टू सास प्लेटफॉर्म. नाउ व्हेन दे आर मूविंग टू सास, बिकॉज ऑफ ऑल द जेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एआई हाइप, दे आर सेइंग कि कैन यू मेक योर प्रोडक्ट सो मच मैच्योर कि ये जेन एआई फीचर्स उसमें आ जाए एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट. मतलब जो भी लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म कौन यूज करता है सबसे ज्यादा? सिटीजन डेवलपर्स, जो एंड कस्टमर्स है वो.
Citizen developers are not that L300 or L400 trained. They are very much like fundamentals और उससे थोड़ा सा आगे जाके 150 तक ऐसे कुछ चीजें सीख सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल नॉलेज. अभी उनको वो सब चीजें जानने के लिए अगर आपके पास SaaS प्लेटफॉर्म है जो आपको आंसर्स जनरेट करके दे रहा है, so those answers really help. So I see that the platform for low code no code is going towards SaaS and it is becoming more AI powered. So AI powered होने की वजह से आपको वहां पे जाके कनेक्टर्स और वो सोच के मैं इसमें क्या यूज करूं, मैं इसमें ये यूज कर सकता हूँ, वो यूज कर सकता हूँ. नो नीड, यू कैन जस्ट आस्क द जेन एआई, द प्रॉम्प्ट विंडो itself understand your requirement, suggest you something, and then you have to decide whether you still want that specific activity in your workflow process or you want to get rid of it. Now that makes my citizen life developers easy. And as a developer, अगर मैं full blown L300 full super coder हूँ तो मेरे लिए भी इजी जाता है, बिकॉज आई वाज स्पेंडिंग 2 to 3 आवर्स थिंकिंग कि ये कैसे बनाया जाए. नाउ आई एम ओनली स्पेंडिंग 30 मिनट्स, सो मैं और एफिशिएंट हो रहा हूं उसमें. सो दैट इज वेयर आई सी. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे ये SaaS में जा रहा है, you see government, most of the countries, they say we want this SaaS tool in our jurisdictions. अगर मेरा ये प्रोडक्ट है, आपने SaaS अवेलेबल किया, ये मेरी बाउंड्रीज छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मेरी कंट्री की बाउंड्रीज. डेटा शुड रिसाइड हियर. नाउ दैट इज द नेक्स्ट थिंग विच ऑल द हाइपरस्केलर, द प्रोडक्ट वेंडर्स आर वर्किंग ऑन, कि जो डेटा है उसका बैकअप, उसकी हाई अवेलेबिलिटी, उसकी रिडंडेंसी, डेटा रेसिडेंसी उसी कंट्री में रहे. सो दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. True. Again, I would like to thank you to sharing these insights. ये एक एक्सपीरियंस से आ सकती है जिसने ज़्यादा काम किया है, जिसने ज़्यादा चीज़ों को देखा है, राइट. सो यू बीइंग प्लेइंग अ रोल ऑफ अ टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिस्ट, सो ये आपके ज़रिए से आ रही है तो काफ़ी हेल्पफुल हो रही है ऑडियंस के लिए. एंड आई थिंक तो फिर पावर प्लेटफॉर्म या लो कोड नो कोड टूल्स और RPA प्लेटफॉर्म जिसमें रेडिली आपको चीज़ें बिल्ड करने में आसानी होती है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट व्हाट वी कॉल. तो इन सब चीज़ों का फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है. तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लर्न करेंगे तो देयर इज नो करियर ग्रोथ या जो बेसिकली. तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने ये आपको क्वेश्चन पूछा था, एंड विच आई थिंक ऑडियंस माइट हैव गॉट द आंसर्स. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है. अब मुझे आपसे ना माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन, लाइक लोगों के ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कैसे ज्वाइन करें, हम आते हैं उस पर, और आपके क्लाउड जर्नी के बारे में भी आते हैं. बट उससे पहले मैं आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा. सो आप रेडी है? आई एक्सपेक्ट आंसर विद इन 10 seconds. Okay. Okay, I'll try my best. So here we go. Most adventurous thing you have done till date? I can say recently I went to a scuba diving back with my wife in Indonesia. हम बाली विजिट किए थे. So जब ये scuba diving की, I never did that. तो मैंने वो first time की. It was very interesting. I really loved it. So the next stop is Thailand, but this was the one. Great. Favorite programming language? I can say Python. Python is the favorite, yeah. Low code या full stack development? Low code. Low code. Okay. Favorite app on your mobile without which you cannot live, basically? Yeah. So now, because I'm actually out of country, I have to connect with all my friends, family, and everyone. WhatsApp is the only one which I really need. Okay. I cannot live with that. Okay. Last question in this segment. Will AI replace human? Very interesting. 10 seconds. Okay. No, it won't. Cannot completely replace. It depends. आप कौन से एंगल से पूछ रहे हो? But if you ask me, okay, Vijay, now you get out of this and the robot will take over. No, it won't happen. So it never. It will be an enabler. Yes. Not one to replace you. Cool. I think आपने काफी अच्छे से और in time आंसर किए. So let's move on to your cloud journey. So आपको आपके सर्कल में Cloudboy के नाम से जाना जाता है. आप काफी फेमस हो उस टर्म में, लाइक Cloudboy. क्या कहानी है इसके बारे में, लाइक आप बताना चाहेंगे? Yes. So ये यूजुअली स्टार्ट हुआ था. इनिशियली क्लाउड वाज लाइक, जब भी मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, मींस लाइक गोइंग इनटू स्टार्टिंग वर्किंग, मेरे जो वर्किंग करियर लाइफ स्टार्ट हुई, इट वाज इन 2012. एंड 2012 में क्लाउड एक्चुअली इतना नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था. आई कैनॉट से बिकॉज आई वाज नॉट अक्रॉस इट, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लाउड. मे बी अदर वर्ल्ड्स दे माइट हैव स्टार्टेड, बट इट वाज वेरी न्यू. It was very new, and I think after 2 years, in 2014, when I started, when I switched to another startup, when I joined that company, so that was, they asked me, Vijay, we want whatever you're doing on premise, do everything same on cloud. And AWS, we have it, so we are hosting our application on AWS. Whatever AD domain, the infrastructure, the high availability and everything, do it over the cloud. So I learned and I started exploring. Now the interesting thing, if you are a techie or very passionate कि मुझे टेक्नोलॉजी सीखना है, मुझे समझना है, which I'm actually a very much a techie guy, तो मैं वो चीजें सीखने के बाद I used to share it with all my friends.
चलो फ्रेंड्स तक तो शेयर कर दिया, मैं मेरे फैमिली में जो भी कोई मिलता था मैं उनसे कभी बात करते हैं, देवर आस्किंग मेरे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है लाइफ में, सो आई यूज्ड टू टेल देम अबाउट क्लाउड. नाउ ड्यूरिंग आल्सो दैट टाइम आई जॉइंड मींस लाइक आई थॉट कि मेरे लाइफ में मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग आई स्टिल नीड टू लर्न एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस. सो मैंने एमबीए के लिए एनरोल किया था केजे सोमैया विद्या विहार में, सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च. So during that time, I was doing the part-time MBA, also I was doing my job. तो कॉलेजेस में आप वीकेंड्स में जाते हो, वीकडेज में आपका रहता है कॉलेज, तो आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स फ्रॉम द प्रोफेसर्स. यू हैव टू डू अ प्रेजेंटेशंस. सो दिस ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज्ड टू शेयर ऑल अबाउट द क्लाउड, माय लर्निंग्स एंड एवरीथिंग विद द ऑन द प्रेजेंटेशन स्लाइड. सो दैट वाज माय असाइनमेंट्स फ्रॉम माय प्रोफेसर्स. सो मुझे क्लास में सब लोग मतलब जब भी उनको पता है कि ये बंदा कुछ प्रेजेंट करेगा, इट विल बी मोर टुवर्ड्स अ क्लाउड. तो उसमें अरे तू अभी क्लाउड मैन तो बोल नहीं सकते बिकॉज वी वर टू यंग ड्यूरिंग दैट टाइम. तो क्लाउड बॉय, अरे क्लाउड बॉय आ गया, बता क्लाउड के बारे में कुछ, क्लाउड के बारे में. सो आई गॉट दैट टोकन नेम फ्रॉम क्लाउड बॉय एंड दैट इज वेयर आई सेड हे whoever I speak to, it's a cloud boy. So I kept that as my identity as a cloud boy. So I got that name from my friends and colleagues. बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. फिर आपने उसी को एज अ ब्रांड लाइक यू कंट्रीब्यूट विद दैट नेम इन योर पब्लिक डोमेन एंड व्हाटएवर यू शेयर योर ब्लॉग्स एंड ऑल, फिर आपने वो आइडेंटिटी को वैसे यूज किया. Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो आपके Azure क्लाउड का एक्सपीरियंस को देखते हुए, राइट, नाउ यू हैव बीन वर्किंग इन द क्लाउड टेक्नोलॉजीज सिंस लॉन्ग टाइम. सो अगर कोई फ्रेशर अभी शुरू करना चाहता है, ही इज अ कॉलेज ग्रेड पास आउट, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? कोई एक पाथ है जो वो फॉलो कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं उस तरीके से? Yes, कर सकते हैं. And let me answer it in a two ways. Because first, if you are a college pass out, आप कॉलेज पास आउट अपने जस्ट अपने एकेडमिक्स फिनिश किए एंड यू आर वेरी न्यू, मीन्स यू डू नॉट हैव अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, वट एवर यू हैव डन इज योर इंटर्नशिप और समथिंग, बट यू आर टोटली न्यू टू कॉर्पोरेट. वट आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट, there is no straightforward path के आपको ये ABCD things करने and then you can crack the code and you can go into a big firms like Microsoft or बड़े AWS other hyperscalers. What I can say, आप जो भी आपके academics complete करने के बाद first get your hands-on and strong understanding about one programming language, whichever that is, whichever you think you are very comfortable, please get that programming language and understanding in and out. अब ये आपको फर्स्ट मिल गया. सेकेंडली, शो योर विजिबिलिटी. विजिबिलिटी मीन्स व्हाट, आपने जो भी लर्निंग की है, आपको जो भी कुछ पता है, डू अ प्रोजेक्ट ओपन सोर्स में, अपलोड इट समवेयर इन द गिटहब. क्योंकि गिटहब में अगर आप प्रोजेक्ट्स अपडेट करते हो, कुछ शेयर करते हो, वट एवर यू लर्न एंड अंडरस्टैंड, पीपल हैव अ विजिबिलिटी कि आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है कम्युनिटी में. That's the second one. Showcase your skills, demonstrated somewhere on the social platform like LinkedIn and the other channels. जो भी आपको फोरम लगता है वहां पे आप शेयर कर सकते हो. That will create your portfolio जहां से आपको वो easily पता चले. Now the third thing, because you have since built up everything, your social portfolio built हो गया, आपने आपके details add कर दिया, आपके skill sets add हो गए. Now if you want to get into any of the hyperscaler, let's take Microsoft in this case. अगर आप उनके career site पे जाते हो, you will see a lot of openings. Look into that openings and see what exactly the profile is asking for. उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है एंड उसमें ऐसे नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है कि आपको ये आना चाहिए, that is something which they say that it is desired to be, and third they say it is recommended, or there is something which they expect. Desired is something, if you have it, it's good. Recommended is like 2 years experience, we need it, or maybe strong experience in your programming language, yes we need. Means that profile is specifically asking more about the development experience, or maybe they are asking more about your sales experience, your solution experience. So that is something you have to focus on your on that profile, what they are looking for. Now third, whenever you, let's say your profile is shortlisted, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद यू आर बीइंग शेड्यूल्ड फॉर एन इंटरव्यू, सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. द टीम जो भी आपको इंटरव्यू लेना चाहती है, जो भी आपको पूछ रही है, दे आर नॉट हियर टू से कि आपको कुछ नहीं आता. दे आर जस्ट हियर, दे आल्सो वांट यू टू जॉइन देम. सो इट्स नॉट लाइक बिकॉज के आपको ज्वाइन करना है बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड. नो, आपको दे वांट यू टू जॉइन देयर टीम, यू बी अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डू and you also have to see what you can contribute to that team. So that's very interesting. So what I would say, have a very good experience understanding and try to understand the profile जो भी वो requirement है. If once you are very clear कि आपका ये क्या है, means आपके deliverables क्या है वो profile में, then it will be very clear for you कि मुझे वो job join करने के बाद मैं क्या करूंगा वहां पे on day to day basis. And this is something which I am aiming for. If I'm not aiming to do anything what I have learned so far, then it's not the right fit for you. Maybe that role is not good for you. You can look for some other thing.
So and Thanks, that is one. thanks. So that is for the freshers. Now I come back to the second part. When you say fresher means because of this Gen AI, the new technological shift. पहली technological shift थी when the whole ecosystem was introduced with cloud. When everyone started around like Yeah. cloud में जाना है, cloud में migrations करना है. The second technological shift which you're seeing right now, it's AI. So वो एक दो चीजें. Everyone is learning, upskilling themselves. So if anyone who is in a banking domain, they are also fresher when they come to an IT. तो वो वहां पे उन लोग शिफ्ट करें. So what I would suggest to those people who are like those freshers coming from a different domain, please have your domain experience, and also when you learn all this new technology, okay, bring your domain experience and this technological learnings जो भी आप different learning platform पे सीखते हो, you can mix it up together, and with that you can actually see how you can come and you can see whether that profile meets your requirement. So that is my advice to all the veterans who want to shift to IT now. थैंक्स फॉर कवरिंग दैट एज वेल. आई थिंक यहाँ पे विजय ने दो आंसर्स किए हैं. पहला तो कॉलेज ग्रेड्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट की है, और दूसरा वो लोग जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं, दे आर वर्किंग समवेयर एल्स और सम अदर डोमेन एंड दे वांट टू शिफ्ट टू आईटी इन सब सर्टेन टेक्नोलॉजीज. तो दोनों ही एस्पेक्ट्स कवर किए विजय. थैंक्स फॉर दैट विजय. आगे बढ़ते हैं. सो अब माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं. आपके माइक्रोसॉफ्ट में जो अभी तक की जर्नी रही है, राइट? आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या प्लानिंग की थी, हाउ यू गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके, फर्स्ट इट वाज नॉट दैट इजी. और एज सच अगर आप पूछोगे प्लानिंग क्या थी, तो मेरे पास एज सच कुछ प्लान नहीं था. बिकॉज वॉट एवर आई नो ड्यूरिंग लाइक माई फॉर लास्ट 10 years, जब भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट, बिफोर ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट, I had an impression, and most of us back in India, we have an impression कि ये बड़े firms सिर्फ IITians और वो जो elite performers होते हैं उनके लिए ही है ये. To some extent, I can say yes, but उन्हीं के लिए है? No, I completely deny that. It is all up to your hard work. और मुझे, I was literally like, I learned a lot about the technology. Day in, day out, I used to understand, I want to explore. And I want to know, like, अगर मुझे कोई join करना है, big firms. So we can say like AWS, Microsoft, Google, they are like a mother womb of IT. तो अगर उनमें आपको जाना है, then you have to give your best. Now how? तो मैं बहुत सारी profiles को track करता था, and मैं usually apply करने से पहले कभी सोचता था, कभी नहीं सोचता था. I just, because I did not have a learning during that time, and didn't even get a guidance, because in my group not that many people joined Microsoft. So I was just trying to see कि क्या best options है, and I used to apply. So to give you an answer, I applied Microsoft में for 48 times. Yeah. Oh, 48 times I applied. Huge number. In last I think 7-8 years I applied 48 times. I got rejected 47 times. So this was the 48th time I got selected. Most of the time था कि my profile was not selected because the requirement जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, preferred क्या है, desired क्या है. I used to never understand that. Later on, जब भी जो भी मेरे प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होती थी और मैं इंटरव्यू से बात करता था, and my profile means like they used to reject me, I used to ask HR and also the people to give me a feedback. So I usually, if I did not hear from the HR, I know who was the panel who interviewed me. I used to reach out to them on LinkedIn, asking, "Sir, ma'am, you interviewed me during this interview, and I was interviewed for this profile. I was not selected, unfortunately, but can you give me your feedback so I can improve for next time?" So, but that's the best thing. See, people in Microsoft, or you see in the other IT firms, they are really very intelligent. They are very humble. They are very nice people. आप अगर उनको पूछोगे कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता, they definitely give you an answer, and that helped me a lot. Every now and then जो भी rejections आते थे, I used to learn from them. I used to take their feedback. I used to improve. The next time again I used to improve, and I think that took me some time, but yes, this is where I came now. But that was the feedback which helped me. But वो तो चलो, आप अगर इंटरव्यू फेस कर रहे हो and then you are facing rejection, तो आपको वो एक स्कोप मिल जाता है फीडबैक रिक्वेस्ट करने के लिए. लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस अगर प्रोफाइल ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, राइट, यू कीप ऑन अप्लाइंग 10 टाइम 15 टाइम, प्रोफाइल ही आपकी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, तो आपको वहां पे गाइडेंस कौन देगा? Yeah, correct. So वो actually, see, now if you have some of the connects, some of the people whom you know within Microsoft, because since you're applying for Microsoft, then they will definitely tell you कि where is the problem, where is the catch, कि आप क्यों reject हो रहा है. If you don't have people, you don't have references working anywhere, right? What you can do is, देखो आपके कोई तो सीनियर कलीग्स होंगे, नहीं तो कोई तो फ्रेंड्स होंगे जो अच्छे बड़े पोजीशंस पे है, somewhere the IT firms, right? You can act where you feel very comfortable. That's the first thing. You can ask them. For me, it's like I have my elder sister. So वो मेरी कैपजेमिनी में, she was also my manager.
So so most of the time when I was to apply and I got to rejected profile में reject हो गया, I was not selected. So I used to take her feedback, asking कि दीदी please help me, try to help me to understand कि मेरी profile rejected. Then she used to dictate कि देख Vijay, this is the thing, they are looking for these things, you don't have capabilities, can you do that, can you do that? I used to say no. Then she said that's the reason it got rejected, you improve on this area. So you should have someone who can give that kind of a mentorship to you. Got it. सो आई थिंक ये हेल्पफुल होगा. इसी लाइक फर्स्ट लेवल तो यही होता है, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, आपको इंटरव्यू तो आने चाहिए, राइट? आई मीन यू शुड गेट शॉर्टलिस्टेड एंड गेट अ चांस टू इंटरव्यू. लाइक पैनल के सामने आप बैठो तो सही. तो सबसे पहले ये दिस इज द मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट, राइट, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. उसके बाद भी इट इज नॉट इजी. आई नो देयर आर there are many rounds. Somewhere I have heard 7-8 rounds or also there. Yeah, it depends कि आपकी प्रोफाइल आप कौन से रोल के लिए जा रहे हो. Sometimes there are 10 rounds, sometimes there are 6 rounds. So you have to go through those multiple rounds. But every round you complete, they will hint you or they will give you some guidance about the next round. And also the HR will tell you, please prep up yourself. Next round will be more practical. So you get your laptop ready, you get your VS Code and everything ready. Awesome, cool. Obviously, आप कुछ one of the best companies में अगर जा रहे हो तो the process has to be tough only, right? अगर वो easy होता तो उसकी फिर value कहाँ रहती? Yes. Okay, moving on to the next question. Microsoft का hiring process अगर आप बताना चाहेंगे, very brief. I know you're not from a recruitment, like you don't work, or it's better कि ये question तो recruitment वालों के लिए है. Like, but whatever you have experience, right, while applying through, since you have now 48 times applying to Microsoft experience, तो मैं जानना चाहूँगा या audience भी जानना चाहेगी कि Microsoft का hiring process कैसा होता है, applicants को किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? Okay, so या देखो ये जो प्रोसेस है ये ओवर द पीरियड बहुत चेंज होती है. माइक्रोसॉफ्ट एवरी ईयर ट्राई टू ऑप्टिमाइज थिंग्स. तो वो चेंजेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है मैं आपको अगर आप बता रहा हूँ आज, ओके, मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इट विल चेंज. सो मुझे मैं जो बताऊंगा, आई डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल कि ये वही रहेगा. बट व्हाट आई वुड एडवाइस इज द फर्स्ट थिंग, whenever you want to apply, there is an opportunity career site करके Microsoft की career site portal है. You go to that career site portal, register and keep a notification on कि you are interested in specific this country or this region. So क्या होगा, जब भी वहां पे कोई भी एक नया रोल ओपन होगा तो irrespective कोई भी रोल हो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे. So that is the first thing where you are informed. Okay. Second, keep your resume up to date. resume up to date रखना है. Second, आपकी जो भी सोशल साइट है, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपको दो चीजें मेंशन की जाती है. इज योर सोशल साइट अपडेटेड? तो सोशल साइट से पूरा रेफरेंस आपका कंटेंट उठाया जाता है, मे बी लिंक्डइन इन दिस केस. सेकंड, इफ यू हैव योर रेज्यूमे वेरी हैंडी, प्लीज डोंट प्रिपेयर अ 10 pages ऑफ रेज्यूमे. कंसाइज कीजिए एंड ऑल्सो डोंट कीप इट वेरी शॉर्ट, लाइक 1 page. इफ समवन लुक 1 page में हाउ मच ही कैन गेट एंड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू. What I would say, bare minimum 2 page and max 3 pages. 3 pages, try to make it concise. आपको 3 pages is more than enough. People will see, read and understand. So that's the one. When you go to the Microsoft portal, apply to that career portal, जो भी role के लिए, I think ideally आपको within a week or 2 weeks HR should respond. Usually ये होता है, means like that is based on my experience जितने मैंने देखे हैं. HR, क्योंकि देखो HR will only respond to you once your profile, when you are submitted, the team who is hiring you think that you are the right fit for that team. Once they feedback, then the HR will do that next communications with you. So usually that takes some time. It doesn't mean कि मैंने apply कर दिया, उन लोग reply नहीं कर रहे, I think they have lost me और मुझे interest नहीं है. No, the day when you apply, please start prepping yourself. You will soon get the feedback. तो देखो अगर नहीं मिलता है feedback, you still have an option, reach out to HR. So that respective HR will receive your email. आप पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट? आफ्टर अ वीक you should, but not today. You apply, next day you please start following up with HR. Don't piss them off. I think thanks for that encouragement. ऑडियंस को काफी हेल्पफुल होगा. So Microsoft ज्वाइन करने का बेस्ट वे क्या है? आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे जो अभी तक आपने शेयर किए ऑन टॉप ऑफ दैट? यस, मतलब कंसिडरिंग, देखो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का आई कैनॉट से 100% आप ज्वाइन हो ही जाओगे, नहीं तो आपको शॉर्टलिस्ट कर ही देंगे. बट आई वुड सजेस्ट सम ऑफ दिस थिंग्स जो एक्चुअली हायरिंग मैनेजर्स को बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट. ओके, द फर्स्ट एडवाइस इज लाइक, आप जो भी कुछ सीख रहे हो, जो भी आप लर्न कर रहे हो ऑन डे टू डे बेसिस, राइट, इज इट सॉल्विंग सम बिजनेस प्रॉब्लम? दैट इज द फर्स्ट थिंग. आप जो भी कुछ भी आप प्रॉब्लम ले लो आईटी रिलेटेड, एंड यू आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजी. इट शुड नॉट बी ओनली माइक्रोसॉफ्ट का ही कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी. नो, you use any of the technology. What was that business problem? What did you solve that business problem? How did you do that? If you can describe this thing over any of the social media platform,
where any individual can go and read about it. That is the first thing. That is something which even hiring managers like. So I used to upload all these things in my GitHub. जो भी मैं सीखता था, कुछ भी करता था, I used to upload in GitHub. Then I used to reference all this information with LinkedIn, क्योंकि GitHub में usually developer community है. HR, hiring managers usually उधर जाते नहीं until unless there is a requirement. So LinkedIn is the platform where people usually go and try to learn and understand and explore. Okay, that is where I used to upload my projects and the skill sets. Second, ये हो गया आपके स्किल सेट रिगार्डिंग. आप जो भी सर्टिफिकेशंस करते हो, यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ, यू आर लर्निंग एवरीथिंग. सो व्हाटएवर सर्टिफिकेशन डू, प्लीज आप उसको और सोशली उसको ये करो, रिले करो, उसे और लोगों तक पहुंचाओ. उसको पता चले कि एज एन इंडिविजुअल दीपेंद्र, एज एन इंडिविजुअल विजय, दे आर सर्टिफाइड इन एज्योर. तो उन्हें पता चलता है ये बंदा एज्योर रिलेटेड है, ये बंदा और प्लेटफॉर्म, और ये बंदा आरपीए रिलेटेड बंदा है जिसमें इनके पास कैपेबिलिटीज है. दैट्स द सेकंड थिंग. सो शेयर मोस्ट ऑफ योर सर्टिफिकेशन कंटेंट्स. थर्ड, once you have all this, whenever you're जो आप ये करते हो, sessions deliver करते हो, seminars देते हो, webinars देते हो in your team or within people, right? Also try to marketize that, like this was the event, this was your contribution, and this is how you help to grow. Help others to grow in the sense you help the community, you help people to deliver the event. So these are the things which you should take specific care of when you deliver, when you are preparing yourself. So, and these are something where managers are really impressed. So I'll just share one quick example. जब भी मेरी hiring हुई थी और मेरे almost initially जो 3 से 4 rounds थे वो complete होने के बाद hiring manager is the last person who interview you, okay, and then the rest is HR. Hiring manager, they interviewed me. They asked me कि Vijay, you shared your resume with me? I said, yes boss, I have shared my resume with you. So before he said, but is it updated? I said, yes, मैंने उसमें कुछ नई चीजें जो की है वो नहीं डाली. So is your LinkedIn updated? Then he went to LinkedIn. Then he started looking at my LinkedIn profile, what I did. Then he started asking and become more curious about what is this Cloudboy. Explain me about Cloudboy. Then I explained about Cloudboy. Then from there he went to my Medium. Then in Medium I used to write all the short stories, the articles, everything. Then he went through all the articles. Then he had a quick glimpse of it. He said that, Vijay, how are you managing to do all these things with your current job? Do you don't have any work over there? I said, no, I finished everything. Then I later on learn. Once I learn, I try to upload and share all these things with my technical community. That was quite impressive. He was a bit impressed. He said that I still want you to continue that even we decide to hire you. So that was something which impressed. So actually, that is my message to मेरा भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि हाउ डू यू मैनेज, और जनरली ऑडियंसेस का सबका ये क्वेश्चन होता है, राइट, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. क्योंकि आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो और द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू कैरी एंड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, तो वो काफी टफ हो जाता है, राइट. लाइक 10 to 12 आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ते हैं इन योर डिलीवरेबल्स, एंड देन हाउ यू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी. तो ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? उसके साथ साथ आपको अपस्किलिंग भी करनी है, राइट. तो आप लाइक दैट वाज माय, आई वाज कमिंग to that question. So आप अब वो आपके conversation से ही निकल के आ गया, तो why not you just say, like share your thoughts on work life balance, फिर upskilling, खुद के लिए कैसे टाइम निकालना and all. Yes, so see, the best thing is, आप अगर ये सब चीजें आपको करनी है और आप करने में सबसे पहले आप इंटरेस्टेड हो क्या. It's no one is forcing you. See, if you come here, do your regular job, then you are doing it. No one is asking you, right? But if you are still interested to do it, then you have to time those things accordingly. And सबसे interesting चीज, मैं जब इंडिया में था, I used to never use my calendar. वो कैलेंडर चीज होती क्या है, तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बता दो, कैलेंडर नहीं. बट आप ओवर द पीरियड जैसे आप एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करते हो, you understand the importance of the time very much. Immediately you start blocking the time. मुझे ये टाइम है, मैं ये टाइम में यही करूंगा, ये टाइम में इतना कर दूंगा. And that is how you block and you get an understanding in the next 24 hours में, this is my family. I have to go after 7. After 7 till morning 6 I won't be available. So उसमें मुझे I have to complete all my things. But after 6, if I'm waking up, the next thing, go hit the gym. मैं gym जाऊंगा, मैं workout करूंगा, I come back, I have my breakfast and everything. I go to office in transit during traveling. I learn and I try to understand. But the most important key takeaways, guys, अगर आप कुछ चीजें सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, प्लीज शेयर इट विद द कम्युनिटी. हेल्प पीपल, हेल्प द टेक्निकल कम्युनिटी ग्रो. क्योंकि आई अंडरस्टैंड इन माई इनिशियल डेज व्हेन आई यूज्ड टू डू ट्रबल शूटिंग, आई यूज्ड टू आस्क फॉर लॉट ऑफ हेल्प ओवर गूगल कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, हाउ आई कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम. एंड देन समवन मुझे टेक्निकल कम्युनिटी में कोई ब्रेक फिक्स सोल्यूशन के लिए सपोर्ट स्टेप्स लिख के देता, दैट रियली हेल्प. एंड समहाउ आई फेल्ट लाइक यस, समवन इज डूइंग इट फॉर मी, आई विल आल्सो डू इट फॉर देम. सो मैं यूजुअली शेयर करता हूँ. ये बहुत अच्छा थॉट है एंड करना चाहिए. लाइक इट्स आल्सो कॉल्ड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. आपने जो सीखा है, इट माइट बी नॉट ऑलवेज फ्री, बट आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुछ चीजें पेड कर सकते हो, कुछ चीजें फ्री में कर सकते हो. सो इट्स अप टू द इंडिविजुअल्स, बट आई वुड से पीपल शुड कंट्रीब्यूट. एंड थैंक्स फॉर
लाइक आई वुड रीइटरेट दैट आई मीन वो थॉट काफी अच्छा लगा. बहुत मजा आया विजय आपके साथ. मुझे लगता है कि वी शुड गो ऑन एंड ऑन, बट जैसे आपने कहा कि टाइम की लिमिटेशंस होती है हमारे पास. हमें ब्लॉग्स बना के काम करना है, हमें फोकस वर्क करना है, वी हैव अदर थिंग्स टू डू. सो कमिंग टू एन एंड, राइट? सो आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में आकर के? आई नो दिस बहुत इज ही योर फर्स्ट पॉडकास्ट, यस सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू दीपेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी. एंड आई वाज थिंकिंग कि इसे और कैसे लोगों तक पहुंचा के हाउ आई कैन शेयर द एक्सपीरियंस एंड जस्ट द टेक अवे. अगर मुझे आपको यहाँ पे आज के पॉडकास्ट में देना है तो आई वुड से गाइस, keep on learning, keep on exploring new things. Don't be in that kind of फिक्स माइंडसेट कि मेरा काम इतना ही है, मैं इतना ही करूंगा. शायद से एआई के वजह से मुझे करना भी ना पड़े, मेरे आगे जॉब में नहीं रहे. ऐसे कुछ नहीं होता. यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. दैट्स इट. So that's my takeaway, guys. Super cool. Thanks. Thank you so much, or have a good rest of the day. Thank you. Thanks for coming. Thank you.